Namaste and welcome to our online yoga session. And now from here, let's start our yoga practice. So when we start our yoga practice, we always go with 3 timing of Om chanting and then we chant any mantra. तो सबसे पहले जब हम अपना योग का अभ्यास शुरू करते हैं, जब हम सेशन शुरू करते हैं, सो वी ऑलवेज स्टार्ट विथ 3 टाइम ऑफ ओम चैंटिंग, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद हम किसी भी एक मंत्र को रिपीट करते हैं. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट अवर योगा प्रैक्टिस. सो सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन. आई एम सिटिंग इन वज्रासन. मैं वज्रासन में बैठ रही हूँ. सो सिट इन एनी कंफर्टेबल पोजीशन. ट्राई टू कीप योर बैक स्ट्रेट, ट्राई टू कीप योर नेक स्ट्रेट. किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी सभी की. नाउ फ्रॉम हियर जस्ट जॉइन योर बोथ हैंड्स इन योर चेस्ट रीजन एंड नाउ वेरी स्लोली वेरी जेंटली क्लोज योर आईज. किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सही और सीधी होगी सभी की. दोनों हाथों को लेके अपनी चेस्ट के सामने जोड़ दे नमस्कार अवस्था में. नाउ फ्रॉम हियर विल चैंट 3 टाइम ओम एंड देन वी विल गो फॉर mantra. So first of all what you have to do, you have to take a long and deep breath in and while exhaling chant om. सबसे पहले लंबी गहरी श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें. So now let's start. Inhale. So we will chant Guru mantra. So let's start. Inhale. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Now very slowly, very gently rub your palms, put your palms on your face, very gently, very slowly open your eyes. Namaste everyone. And now from here let's start our yoga practice. So first practice is that we will do some movements of our neck. तो सबसे पहले जो हमारी practice होगी, we'll start with our neck, then directly we just go for our shoulders, then we do some movements of our wrist. After this we will do some twisting, we will do some basic movement. After that we will go for our leg practice. So now first of all what you have to do, when you will take inhalation you have to bend your neck backward and exhale, put your chin down, bend your neck forward. श्वास लेते हुए आपको गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना है, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ. So what we will do this practice for 3 times only. So now let's start. 1, inhale, exhale, bend down. 2, 3 and last 4. So now the neck bending is completed. Now after this we will move to our next practice, that is the twisting of our neck. So same what we will do, same we will do the movement of our neck. So this time what we will do, we will twist our neck right side and then left side, right side and then left side for 3 to 4 times. Okay, so now let's see. Inhale, move your neck right side, exhale, bring your neck forward, inhale, move your neck left side and exhale, bring your neck forward. Simply आपको क्या करना है, जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपको अपनी नेक को राइट साइड ट्विस्ट करना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी नेक को सामने की तरफ लेके आना है फॉरवर्ड. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 2, 3 and last 4. So release and relax, just a complete relaxation. And now from here what we will do, take your right palm, put it in your left ear, bend your neck right side, and now hold here for 20 seconds and start. Try to expand your chest. Okay, take your left palm, put it in your thighs and now hold. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Release and relax. Just take complete relaxation. Do the same practice with your opposite side. So now take your left leg, put it in your right ear, and bend your neck a left side. And now let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and last 20. Release and relax. Just take complete relaxation. Now what you can feel, आप क्या feel कर सकते हैं that you are feeling pain. हल्का सा जो यहाँ पे आपका movement हुआ है, थोड़ा बहुत जब आप लोगों ने stretch किया था neck को right side और left side, so the side of your neck you can feel a little stretch here. So if you are feeling a lot of pain, what you can do, just take your palm, rub your palm properly. Okay, अच्छे ढंग से रब करेंगे दोनों हाथों को जब तक हाथों में हीटनेस नहीं आती है. ओके, रब योर पाम्स नॉर्मली एंड प्रॉपरली. ओके, सो रब इट एंड नाउ टेक योर पाम एंड मसाज योर नेक कंप्लीटली. थोड़ा सा जो है हाथों की हथेलियों को नेक पे लगाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्की फुल्की मूवमेंट्स देंगे, थोड़ा सा टच करेंगे और यहाँ की मसल्स को रिलैक्स करेंगे. नाउ दैट्स इट. सो वी हैव डन सम बेसिक मूवमेंट्स ऑफ आवर नेक. So simply we will directly move to our next practice, that is shoulder rotations. Okay, so now what you have to do, bring your hands in 90 degree with the help of your fingertips. What you have to do, you have to touch your fingertips in your shoulders. Now from here what we will do, we will rotate our shoulders for 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise like this. Now start. 1, 2, and last 3. Now from here 3 times anti-clockwise. 1, 2, and last 3. जितना बड़ा सर्कल हो सकता है उतना बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे. सो ट्राई टू रोटेट योर कंप्लीट शोल्डर्स, ट्राई टू रोटेट योर कंप्लीट एल्बोज. बिल्कुल अच्छे ढंग से आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ना उतना करेंगे. ओके, व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड, लाइक जब आपके दोनों एल्बोज फॉरवर्ड की तरफ आ रहे हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपके जो एल्बोज होंगे, जो आपकी कोहनियां होंगी वो मीट करेंगी. ब्रिंग योर बोथ एल्बोज टुगेदर लाइक दिस. एंड व्हेन यू आर गोइंग बैक, तो what you have to do, try to expand your chest. जितना chest आप expand करेंगे उतनी अच्छी आपकी movement होगी. Okay, so now that's it, simple. After this practice what we will do, we will directly move to our wrist practices. So bring your both hands forward, face your palm toward your camera or anything else, or toward your wall. Okay, so now expand your fingers. Now contract, expand your hands and then contract. हाथों की दोनों हथेलियों को आपको खोलना है और उसके बाद दोनों को contract करना है. So we will do this practice for 3 times. Now start. 1, 2, 3, 4, 5 and last 6. So what we have done, एक मोटा मोटा ले लीजिए कि आपने 3 टाइम क्लॉकवाइज किया तो 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज किया. So normally if you are comfortable with 3, 4 or 6, you can go with anything is okay. So if I will say that do this practice for 3 times and if I am doing it with a 6, so what you can do, if you have capacity, if you are not feeling pain, so you can go with 6 round also. So now after this we will directly move to our next practice of our wrist, of our palms, of our fingers. So that is called wrist rotation. जो simple हमारी जो रिस्ट है उसके आगे वाली जो प्रैक्टिसेस होती है, we will not going for our like complete elbow and hands. Okay, so simply again what you have to do, bring your hands at 90 degree, keep your all the fingers together. Now keep your thumb in, cover your thumb with your finger. Okay, simple. Now what you have to do, you have to make fist. Now simply what we have to do, we have to rotate our wrist 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise. सिर्फ आपको क्या करना है, simple wrist rotation करनी है 3 times clockwise and 3 times anti-clockwise. So now let's start. 1, 2 and last 3. Now anti-clockwise. 1, 2 and last 3.
release and relax, just take complete relaxation. Now you can feel, आपको अगर थोड़ा बहुत लग रहा है that if you are feeling pain in your legs, so what you can do, simply just sit in दंडासन. दंडासन पे बैठ जाइए, दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आए, try to keep your spine straight. Now shake your legs. Simply आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आना है और पैरों को अच्छे ढंग से शेक करना है. Just shake your both legs. और अगर ज्यादा पेन हो रहा है, so what you can do, take your palm and tap your legs like this. थोड़ा सा legs को tap कर लीजिए, okay? And what you can do, you can come in Baddhasan and then shake your legs here properly. After this practice, what we will do, if you are comfortable, you can sit in Vajrasan in same position. And if you are not comfortable, you can sit in Sukhasan. आप नॉर्मली जिसको हम घर पे कहते हैं ना कि पालती मार के बैठना, सो यू कैन सिट इन दिस पोजीशन आल्सो. सो आई एम नॉट फीलिंग पेन बट आई एम जस्ट शोइंग यू. तो मैं अभी नॉर्मल सुखासन पे बैठी हूँ. सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, वी विल डू सिंपल ट्विस्टिंग ऑफ आवर स्पाइन. नॉर्मल सी ट्विस्टिंग होगी बट इट इज वेरी इफेक्टिव. दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक, दिस आसन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. So normally first of all sit in Sukhasan, straight your neck and straight your spine. Take your right palm, put it in your left thigh, simple. जो आपका left hand होगा वो आपकी कमर के पीछे जाएगा simply. Now what you have to do, try to look back and hold here for 10 seconds and now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Now release and relax. Just take complete relaxation. Now do the same practice with your opposite side and now let's see. So again take your left palm, put it in your right knee. आपका जो right hand होगा वो simple आपकी spine के पीछे आएगा to take support and put it in your mat. Okay. So now let's start. And if you are more flexible, so what you can do, जो आपका right hand है उससे आप जो है opposite thigh को grab कर सकते हैं like this. You can see. I don't know if it is visible or not, but from here I can show you. Okay, so simply क्या है, आपके इस हाथ को अगर आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं, if you can put your right hand, right palm in your left thigh, so you can go with that. So now let's see from side. Keep your spine straight, look forward, take your left palm, put it in your right knee. Okay, now जो आपका back of the hand होगा, simply what you can do, you can put it here on your mat. कमर के पीछे आप रख सकते हैं. If you are more flexible, you can grab your opposite thigh. Okay. Now hold here for 10 seconds and look back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Very slowly, very gently, just release your आसन. Okay, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे ढंग से अपने आसन को रिलीज करें. दोनों पैरों को सामने लेके आए, लेग्स को शेक करें. Okay, if you are feeling pain in your wrist, what you can do, थोड़ा सा रिस्ट को रोटेट कर लीजिए, थोड़ी सी शोल्डर्स की मूवमेंट कर लीजिए हल्के फुल्के ढंग से. Now after this practice we will directly move to our legs practice. So first of all what you have to do, simply just bend your both legs here. दोनों पैरों के बीच पे सबसे पहले शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस आएगा जितना आपके शोल्डर्स है. ओके, नाउ फ्रॉम हियर जस्ट बेंड योर बोथ लेग्स. टेक योर पाम, पुट योर पाम्स बिसाइड योर ग्लूट्स. दोनों हाथों को जो है आपको ग्लूट्स के बगल में रखना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू आर बेंडिंग योर लेग लेफ्ट साइड, यू हैव टू लुक एट योर राइट साइड. अगर आपके दोनों पैर लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो आपकी बॉडी राइट साइड की तरफ ट्विस्ट होगी. ओके, नाउ लेट्स सी. 1 and then 2, 3 and then 4. So we will do this practice for 3 times right side and 3 times left side. Normally क्या होगा, 3 टाइम लेफ्ट साइड हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी मूव होगी. अगर लोअर बॉडी लेफ्ट जा रही है तो अपर बॉडी राइट की तरफ ट्विस्ट होगी. सो दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5 and last 6. So 3 with right and 3 with left, so total is 6. Okay, so now one last time again we will do the same practice. This time we will do holding. एक बार फिर से करेंगे.
हम होल्डिंग करेंगे फॉर 15 सेकेंड लेफ्ट साइड एंड 15 सेकेंड राइट साइड. ओके, सो नाउ लेट्स सी. बेंड योर लेग्स लेफ्ट साइड, लुक एट योर राइट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ योर अपर बॉडी. नाउ होल्ड हियर फॉर 15 seconds. नाउ स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. If you have capacity to hold for 20 seconds, you can go with that. Again, I will count 1 to 20. If you're beginner, you can only go with a 5 to 10 or 15. But if you're advanced practitioner, you can go with 20 seconds. So now let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and last 20. Release and relax. Just take complete relaxation of your body. पूरा शरीर शिथिल, पूरी बॉडी रिलैक्स. थोड़ा सा किसी भी मेडिटेटिव पोजीशन पे बैठ जाएं. किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे सभी. दोनों हाथों को लेंगे, अपनी नीज पे रखेंगे. ओके, और व्हाट यू कैन डू, टेक योर राइट palm, पुट इट इन योर चेस्ट, टेक योर लेफ्ट palm, पुट इट इन योर नेवल. नाउ फ्रॉम हियर रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर ब्रेथ एंड रिलैक्स योर माइंड. जस्ट ट्राई टू टेक सम लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ इन एंड आउट. कुछ लंबी गहरी श्वास ले, लंबी गहरी श्वास छोड़े, फिर से लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़े. जस्ट ट्राई टू टेक सम लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ इन एंड आउट. After this position, what we will do, we will directly go for Baddha Asana, butterfly pose. So how to do butterfly pose, let's see. So first of all, what you have to do, you have to sit in Dandasana. Now bring your both feet together. सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे. उसके बाद दोनों पैरों की पंजों को, जो दोनों पैरों के पंजे होते हैं, you have to bring your both feet together like this. Okay, now take your palms. With the help of your palm, just grab your ankles. Now try to keep your spine straight. Now shake your legs like a butterfly. अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को एक बटरफ्लाई जिस तरह से उड़ती है, वो अपने विंग्स से उड़ती है. तो normally what you have to do, you have to shake your legs, okay, like a wings, okay, the wings of butterfly. So this position. ओके, इस आसन को हम लोग बटरफ्लाई पोज क्यों कहते हैं? बिकॉज वी शेक अवर लेग्स लाइक अ बटरफ्लाई. सिंपली क्या है, दैट दिस इज द बॉडी ऑफ बटरफ्लाई एंड दीज आर द विंग्स ऑफ बटरफ्लाई. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर योगा सेशन. What we will do, okay, we will do this practice for 3 times and we will shake our legs for 30 seconds. So now let's start. Look forward, or you can just close your eyes also and try to keep your back straight and neck straight. So now I am closing my eyes. If you're comfortable, you can open your eyes also. Okay, so now let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and last 30. Release and relax. Just take complete relaxation. If you're feeling pain in your legs, just straight your both legs and now shake your legs. दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आएंगे. लेग्स को अच्छे ढंग से शेक करेंगे. Just shake your complete legs. Again, after few seconds, what we will do, we will again prepare our body for Baddhasana, butterfly pose. So now again take a position and start your practice. After few seconds, just take some relaxation for 10 to 15 seconds. 10 से 15 सेकेंड थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए. थोड़ा सा शोल्डर्स की मूवमेंट कर लीजिए. बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए. राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड. Simply just do, and then again, and now let's start our butterfly pose. So again, keep your both feet together. This time try to touch your heels with your pelvic region. Okay, take your palm. With the help of your palm, just grab your ankles and now start. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and last 30. Release and relax. Just take complete relaxation here. Keep your both legs forward. दोनों पैरों को सामने की तरफ लेके आए. पैरों को अच्छे ढंग से शेक करें. Just shake your complete legs. Now from here, let's see that which asana we will do. We will prepare ourselves for boat pose Noka asana. Okay. So now let's see how to do Noka asana. So first of all, for Noka आसन, this is a kind of balancing आसन. ये एक balancing आसन है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? When you will do Noka आसन ना, so balancing आसन में जब भी हम लोग balancing आसन करते हैं, so what we have to do when we go in the position, first of all look at one point. सामने एक point पे देखना है सभी को. Okay, if your eyes will be fluctuate, अगर आपकी eyes इधर उधर जाएंगी, so you can't make balance in balancing positions. Okay, so first of all what you have to do, let's see. Sit in दंडासन में बैठेंगे सभी. Now make distance between your both legs. दोनों पैरों पे shoulder level जितना distance आएगा. Now from here what we will do, we will bend our both legs. Now what you have to do, जस्ट ट्राई टू फोकस एट वन पॉइंट. सामने किसी भी एक पॉइंट पे देख के आपको जो है फोकस करना है. सबसे पहले ट्राई टू मेक बैलेंस, ट्राई टू फोकस देयर. ओके, फोकस ऑन वन पॉइंट एंड देन ट्राई टू मेक बैलेंस. नाउ जस्ट टेक योर palm. With the help of your palm, just grab your thighs. Okay, now what you have to do, keep your spine back. थोड़ा सा अपनी स्पाइन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे. Now what you have to do, you have to shift your weight in your glutes and in your lower back. जो आपका weight होगा वो आपके glutes और lower back पे आएगा. Okay, so now from here if you are comfortable, keep your right leg up and then left leg up. Simple, that's it. Those who are beginner, they can go with this position. Try to make balance here. And if you are advanced practitioner, you can straight your legs. Okay, simply अब आपको क्या करना है? This position was for those who are beginner. And if you are advanced practitioner, you can straight your legs and straight your hands and stay here for 20 to 30 second or 10 to 5. It's up to you. It's do it according to your capacity. जितना भी आपसे लगता है उतने सेकंड की होल्डिंग करिए यहाँ पे. Okay. After this position, we will directly move for our next practice. So एक बार फिर से देखते हैं that how to do Noka आसन. Bend your legs. Okay. Keep your spine straight. Shift your weight in your glutes. And now hold here. I will hold for 10 seconds only. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Now I am putting my both palms in my thighs and now stay here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Release and relax. Just take complete relaxation of your body. Shake your legs if you want to. Body को अच्छे ढंग से shake करेंगे. Okay. So now let's move to our next asana that is called कैमल पोज ऊष्टासन. इसके बाद हम लोग ऊष्टासन की प्रैक्टिस करेंगे. सो वी जस्ट कॉल्ड ऊष्टासन एज कैमल पोज ऑल्सो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम इन योर नीज. सबसे पहले आपको अपने घुटनों पे आना है. यू हैव टू कम इन दिस पोजीशन इन योर नीज. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल मेक डिस्टेंस बिटवीन आवर बोथ नीज. दोनों नीज पे जो है आपको शोल्डर लेवल जितना डिस्टेंस लेके आना है. सिंपल, दैट्स इट. Okay, now what you have to do, turn your body right or left according to your capacity, according to your choice. I am turning my body left side. Okay, so this is for beginners. जो beginners हैं, okay, we will not go for advanced. In next session we will go for advanced. So now what we will do,
simply just take your palms, put your palms in your glutes, in your lower back. Now what you have to do, with the help of inhalation, you have to bend your body backward. श्वास लेते हुए आपको अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाना है, वहीं पे होल्डिंग करनी है for 10 seconds, and then what you have to do, you have to come up. Let's see, सबसे पहले देखते हैं that what we will do and how we will do, किस तरह से आसन पे जाएंगे, किस तरह से आसन पे आएंगे, then practice it. Okay, so make distance between your both legs, take your palm, put your palm on your glutes. Now inhale, go back, hold there for 10 seconds. Now inhale, इस तरह से आपको आसन पे जाना है और इस तरह से आपको आसन पे आना है. ओके, सो नाउ अगेन लेट्स सी, दिस टाइम आई विल काउंट फॉर 10 सेकेंड्स. अब मैं काउंटिंग करूंगी, सो लेट्स प्रैक्टिस इट विद मी. अगेन कम अप, टेक योर पाम्स, पुट योर पाम्स ऑन योर ग्लूट्स और लोअर बैक. ओके, वैसे तो दोनों ही जगह पे रखना है, इन बिटवीन आपको रुकना है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10. Release and relax. Just sit down in your calf muscles. calf muscles पे बैठेंगे. ओके, बॉडी को अच्छे ढंग से रिलैक्स करेंगे. वज्रासन पे बैठ जाएं और you can, what you can do, you can just make distance between your both legs and now just take complete relaxation. पूरी बॉडी को अच्छे ढंग से रिलैक्स करेंगे. जस्ट रिलैक्स योर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट. हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे ढंग से रिलैक्स करें. आफ्टर दिस प्रैक्टिस लेट्स सी दैट हाउ टू डू भुजंग आसन. Okay, after this practice I will go for Bhujangasana. We will do some variations in Bhujangasana, and after Bhujangasana we will directly go for bow pose Dhanurasana. So now let's see that how to do Dhanurasana, bow pose. Okay, first of all we will go for Bhujang. We will do some variations there, and then we will go for bow pose Dhanurasana. So for Bhujangasana what you have to do, first of all you have to lay down on your back. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने पेट के बल लेटना है. Okay, so simply just lay down on your back belly like this. So जब आप भुजंग आसन कर रहे हैं, what you have to do, जब पीछे से आपके दोनों पैर होंगे ना, you have to keep your both feet together. So first of all lay down on your belly, keep your both legs together. Now take your palms, put your palms beside your chest. Okay, now inhale and lift your upper body up. Okay, so inhale, lift your body up, straight your elbows and hold here for 10 seconds. Now start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and release and relax. Just put your forehead down. Relax here for few seconds. यहीं पे थोड़ी देर जो है आपको रिलैक्स करना है. After this what you have to do, after doing भुजंग आसन you have to directly come in शशांक आसन. तो शशांक आसन में किस तरह से आएंगे, दोनों पैरों पे डिस्टेंस लेके आएंगे, शोल्डर लेवल जितना. ओके, पुश योर palms and directly put your forehead on your mat. Okay, that's it. And relax here for few seconds. यहीं पे थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे. So now what we will do, again we will go in Bhujangasana. So I will not shoot this time demonstration, you have to perform it. Okay, so just follow the instructions and hold there for 15 seconds. वहीं पे 15 second की holding करेंगे. Now let's start. Lay down on your belly, keep your both legs together, take your palm, put your palm beside your chest. Now inhale, lift your upper body up. Now hold here for 15 seconds. I will count 1 to 15. वहीं पे holding करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and last 15. Release and relax. Just take complete relaxation there. पूरे शरीर को बिल्कुल अच्छे ढंग से रिलैक्स करेंगे भुजंग आसन में.
just take your complete body relaxation. Now after this we will directly move for our next variation. अब आपको क्या करना है? Again you have to come in Bhujangasana, then from Bhujangasana you have to come in Parvat, Parvat to Bhujang and Bhujang to Parvat. So now let's see that how to do it. सबसे पहले just lay down on your belly and come in Bhujangasana like this. Okay, now come in Bhujangasana. Now from Bhujang what you have to do, you have to come in Parvat in this position. 1, 2, 3 and 4. So with the breathing try to do this position for 5 times only. Okay, so inhale, come in Bhujangasana, exhale, come in Parvat, inhale, come in Bhujangasana, exhale, come in Parvat. 2, 3, 4 and last 5. Drop your knees down, release and relax. दोनों पैरों को जो है मैट पे रख लीजिए, बॉडी को बिल्कुल अच्छे ढंग से रिलैक्स करेंगे सभी. Just relax your complete body. Now after this let's see that how to do Dhanurasana bow pose. Okay, so first of all just lay down on your belly. Make distance between your both legs, दोनों पैरों के बीच में shoulder level जितना distance लेके आएंगे. Bend your right leg, bend your left leg with the help of your palm. Just grab your ankles and now inhale. Lift your legs up, lift your thighs and chest up like this. Inhale. Hold here for 5 seconds and start. 1, 2, 3, 4 and last 5. Release and relax. Keep your both legs down. Again from here just directly go in Shashankasana. Shashankasana में जाएंगे, अपनी बॉडी को शशांकासन में अच्छे ढंग से रिलैक्स करेंगे. Put your forehead down. Relax here completely. पूरा शरीर शिथिल, पूरी बॉडी रिलैक्स. Just take complete relaxation of your body. Now from here what we will do twisting, okay, of our body. तो थोड़ा बहुत हम लोग अब जो है अपनी upper body को twist करेंगे. So now from here just sit in Vajrasana. Now inhale, raise your both hands up, interlock your finger, fix your palm towards ceiling and twist your body upside. Okay, so now hold here for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. And now exhale, keep your both hands down, release and relax. दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे, बॉडी को अच्छे ढंग से रिलैक्स करेंगे. Just take complete relaxation. Now again prepare your body for the same practice, but इससे पहले if you are feeling pain in your shoulders, so do some shoulders movement. थोड़ा सा shoulders की movements कर लीजिए. 2 times clockwise and 2 times anti-clockwise is enough. So now again take a position. Inhale, keep your both hands together, interlock your finger, fix your palm towards ceiling and now hold here for 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last 20. Release and relax. Just take complete relaxation. पूरे हाथों को, पूरे शरीर को, अपनी बॉडी को बिल्कुल अच्छे ढंग से रिलैक्स करिए. Just take your complete body relaxation. Just close your eyes, take your palms, put your palms on your knees or interlock your finger. Just take some long and deep breath in and out. लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें. Just take some long and deep breath in and out. After this position let's see that how to do side plank. Okay, so directly we will go for a side plank. Okay, so first of all for side plank what you have to do, you have to come in high plank. आपको सबसे पहले high plank पे आना है, उसके बाद we will do side plank. Okay, so now let's see. So for
high plank, first of all come in Parvatasan, then from Parvatasan you have to come in high plank, then from high plank you have to come in side plank. So now let's see, सबसे पहले देखेंगे that how to do, and then you can perform this position and you can hold there for like 10 to 15 or 15 to 20 or 1 to 5 according to your capacity. जितना आपको ठीक लगता है उतना आप उसको follow कर सकते हैं. Okay, so now just take your position. First of all, come in your knees, drop your palms down. Now from here directly keep your knees up like this. Keep your knees up. Okay, now shift your weight in your both palms. Look forward. सबसे पहले सामने की तरफ देखेंगे. This is called high plank. Okay, दोनों पैर एक साथ रहेंगे. Try to keep your both legs together. Now from here, just turn your body towards your camera and hold here for 10 seconds. So now let's start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आपको क्या करना है? आपको अपने हाथों की हथेलियों की तरफ देखना है. Look towards your palm. 7, 8, 9 and last 10. Now come in high plank. Drop your knees down and sit in Shashankasan. If you want to go in Shashankasan, you can go for that. If you want to take relaxation, तो Shashankasan में जाएं, body को अच्छे ढंग से release करें, relax करें. Okay, so I'm just sitting in normal position. My favorite position is Vajrasan, so I'm just sitting in this position. So now just do some wrist rotation. Wrist को हमने rotate क्यों किया? Why we have done wrist rotation? Because the whole weight come in my left wrist. अभी what I have done this practice with my left side. Left hand को मैंने नीचे रखा था. Okay, I have just hold here with like for 10 seconds I have to holding. तो मेरा जितना भी body का weight था वो मेरे palm पे था, वो मेरी wrist पे था. Okay, so this is the reason कि हमको अगर थोड़ा सा पेन हो रहा है, वैसे तो जो भी बैलेंसिंग आसन हम लोग करते हैं, अगर हमारा हाई प्लैंक है, हमारा लोअर प्लैंक है, हमारा पर्वत आसन है, इफ वी आर परफॉर्मिंग दैट पोजीशन, सो उसके बाद ट्राई टू डू सम रिस्ट रोटेशन. व्हाई? बिकॉज इट मेक्स स्ट्रॉन्गर. ओके, हमारी रिस्ट इससे स्ट्रॉन्ग होती है. सो अगेन वी विल डू सेम पोजीशन. अगेन आई विल डू सेम पोजीशन. अभी मैंने लेफ्ट से किया, सो नाउ आई एम डूइंग इट विद माई अपोजिट साइड फ्रॉम माई राइट. So now let's see again that how to do this position. Again, come in your knees simply. Put your palms down. Come in Parvatasan. From Parvatasan, come in high plank. That's it. Okay. So now let's go. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Put it down here, drop your knees and now sit in Vajrasan. Vajrasan में बैठेंगे सभी बिल्कुल नॉर्मल होके. डू सम रिस्ट रोटेशन. थोड़ा सा रिस्ट को रोटेट कर लीजिए. ओके, 3 टाइम क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. After this position, we will directly move for Manduk Asan. So now let's see that how to do Mandukasana. So सबसे पहले we will sit in Vajrasan. थोड़ा सा relax कर लीजिए if you're feeling pain in your body. Okay. Now let's see that how to do Mandukasana. Sit in Vajrasan. Bring your both hands in 90. Keep your thumb in. Cover your thumb with the help of your fingers. Now make a fist. Put your both fist beside your navel region. नाभि बीच में रहेगी. दोनों हाथों की हथेलियों की मुट्ठी बना के आपको क्या करना है? नाभि के बगल में रखना है. So put your both fist beside your navel region. And now what you have to do, first of all, try to keep your spine completely straight. Expand your chest. Now inhale. While exhaling, bend forward. श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए. Exhale. Now look toward your camera or look front and now hold here for 20 seconds and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last 20. Now inhale, come up, release and relax.
दोनों हाथों की हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर रख के बॉडी को अच्छे ढंग से रिलैक्स करेंगे. After this position, again we will do same practice. Again we will try to hold there for 20 seconds. So again, first of all relax your body. After this, let's see. Okay, थोड़ा सा breath को normal कर लीजिए if you're feeling pain. And now let's start. Keep your hands in 90, keep your thumb in, cover your thumb with the help of your finger, make a fist, put your fist beside your navel. Now exhale. First of all, inhale here. Exhale, bend your body forward, look forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and last 20. Release and relax. Just take complete relaxation here. पूरा शरीर शिथिल, श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर लेके आएंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे. थोड़ा सा रिस्ट को रोटेट कर लीजिए, थोड़ा सा शोल्डर्स की मूवमेंट कर लीजिए. डू सम रिस्ट रोटेशन एंड डू सम शोल्डर मूवमेंट्स. पूरा शरीर शिथिल, पूरी बॉडी रिलैक्स. नाउ आफ्टर दिस प्रैक्टिस लेट्स सी दैट हाउ टू डू सूर्य नमस्कार. तो अब हम लोग जाएंगे डायरेक्टली सूर्य नमस्कार पे. तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दैट व्हाट इज सूर्य नमस्कार, हाउ मेनी आसन कम इन सूर्य नमस्कार एंड हाउ टू परफॉर्म सूर्य नमस्कार. उसके बाद हम लोग डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन पे जाएंगे. सो सूर्य नमस्कार इज द सीरीज ऑफ 12 आसन. सूर्य नमस्कार जो है 12 आसनों की सीरीज है. सो इफ यू आर लाइक इफ यू हैव बिजी लाइफ, आपकी लाइफ अगर बहुत ज्यादा बिजी है तो सूर्य नमस्कार इज द वेरी पावरफुल टेक्निक. जो सूर्य नमस्कार है वो बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल टेक्निक है. इफ यू आर नॉट डूइंग एनी आसन फॉर 1 hour और एनीथिंग एल्स, सो व्हाट यू कैन डू, सुबह और शाम लाइक अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाइए, जब सनराइज होता है तो उसके बाद सूर्य नमस्कार के इफ यू आर डूइंग 5 to 6 राउंड और 10 राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार ना, इट इज लाइक वेरी बेनिफिशियल टू योर बॉडी. एंड इफ यू वांट टू लूज वेट, अगर आपको वेट लॉस के लिए जाना है, इफ यू आर गोइंग इन योर वेट लॉस जर्नी, ट्राई टू डू सूर्य नमस्कार फॉर 20 टाइम्स. स्टार्टिंग में तो डू इट ओनली फॉर 3 to 4 टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको करिए. ओके, सो बट धीरे धीरे डे बाय डे you can include 2 आसन more, like 2 rounds more in सूर्य नमस्कार. So it is very powerful technique. Okay, so we do सूर्य नमस्कार with breathing. हम कोशिश करते हैं कि जब हम लोग ब्रीथिंग के साथ करें, so it will give us like more benefit, वो हमको देता है. But if you are comfortable you can go with breathing. If you are not, you can't. Yeah, you can just like ignore it with, you can do it without breathing also, but try to do it with breathing. Okay, so इफ यू हैव एनी सर्जरी इन योर नीज, अगर आपका नी में कोई सर्जरी हुआ है, सो ट्राई टू अवॉइड सूर्य नमस्कार. ओके, एंड इफ यू हैव एनी सीवियर सर्वाइकल पेन, ओके, सीवियर है अगर बहुत ज्यादा सीवियर, सो देयर आर समथिंग दैट वी हैव टू लाइक मैनेज. ओके, एंड इफ यू हैव लाइक एनी सर्जरी इन योर लोअर स्पाइन, सो ट्राई टू अवॉइड सूर्य नमस्कार. थोड़ा सा फिर इसको अवॉइड ही कर सकते हैं आप लोग. अगर घुटनों में कभी कोई सर्जरी हुई है या फिर आपके एंकल्स में कोई सर्जरी हुई है या कभी एंकल लाइक बहुत गंदे ढंग से फ्रैक्चर हुआ है, सो ट्राई टू डू इट नॉर्मली, डोंट डू इट एज अ वर्कआउट. सूर्य नमस्कार को फिर आप वर्कआउट की तरह मत करिए. बट इफ यू हैव नथिंग, योर बॉडी इज फाइन, सो यू कैन गो इट विद. ओके, go with सूर्य नमस्कार. So बहुत ज़्यादा हो चुका है that explanation, and if you have any doubt you can just say and I can try to solve your all the queries. So now let's see that how to do सूर्य नमस्कार. First of all, what you have to do, you have to stand up in your mat. सबसे पहले आपको मैट पे खड़े होना है. तो जब भी हम लोग सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं, when we start our सूर्य नमस्कार, we always start with our front side. हम लोग या तो राइट साइड में आएंगे या तो लेफ्ट साइड में आएंगे. So फर्स्ट ऑफ ऑल what you have to do, you have to come in front part of your mat. So आपको कभी भी हम जब सूर्य नमस्कार शुरू करते हैं तो हम बीच से नहीं करते हैं या फिर इस साइड से नहीं. We always start it with our front. So now first of all what we will do, I will come in my front part of my mat. I will come here. So now let's see. Follow the instructions. Listen the guidance that what I am saying and try to follow that. Okay. So now first of all stand straight in your mat. Okay. Look at
वन पॉइंट, सामने किसी एक पॉइंट पे देखने की कोशिश करेंगे. नाउ इनहेल, जॉइन योर हैंड्स इन योर चेस्ट रीजन. इनहेल, रेज योर हैंड्स अप. एक्सहेल, bend your body forward. Inhale, take your right leg back, come in Ashwasanchalanasana. Exhale, take your left leg back, come in Parvatasana, mountain pose. Inhale, rest your knees. Exhale, chest and chin. This is called Ashtang Namaskar, 8-limb salutation pose. Now inhale, lift your body up. This is called cobra pose, जो हमने इससे पहले प्रैक्टिस की थी. Okay, so this is called Bhujangasana, cobra pose. Now again, come in Parvatasana. Take your right leg front. Take your left leg front. Raise your arms up. Come in Hastuttanasana. Exhale, release and relax. So now again we will do this practice. Inhale, raise your hands up. Exhale, bend your body forward. Inhale, take your left leg back. Exhale, take your right leg back. Inhale, rest your knees. Exhale, chin and chest. Inhale, lift your chest up. Exhale, come in Parvatasana, mountain pose. Take your right leg front, left leg front. Raise your arms up, release and relax. So this was the one round of Surya Namaskar. ये जो है first round था Surya Namaskar का. Okay, so now after Surya Namaskar we will move to some asana which we will do in standing position. So first asana is Tad asana. Okay, so first of all what you have to do, just stand straight in your mat, simple. Now inhale, raise your both hands up, interlock your finger, face your palm towards ceiling. And now what you have to do, you can see my legs. Okay, so what you have to do, just keep your heels up and come in your toes. Shift your weight in your toes. Now hold here for 10 seconds and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Release and relax. Just take complete relaxation here. पूरा शरीर शिथिल, पूरी body relax. Relaxation करने के लिए what you can do, you can make distance between your both legs. Expand your hands, just close your eyes, and now from here just relax here for 1 to 2 minutes or 30 to 40, 40 to 50 according to your capacity. Okay, so now inhale, exhale, inhale, exhale. Again take a long and deep breath in, exhale, inhale, and last exhale. Release and relax. Just take complete relaxation. Now the second position is वृक्षिक आसन, प्री पोज. बहुत कॉमन आसन है, हर किसी को जब भी हम लोग योगा कहते हैं तो इसी आसन को उनको इमेजिनेशन आती है कि हाँ दिस इज कॉल्ड योगा. ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट हाउ टू डू प्री पोज वृक्षिक आसन. So first of all, stand straight. जैसा कि मैंने आपको बताया था that this is called balancing आसन. ताड़ासन भी balancing आसन था. You have to focus on one point. Okay. So वृक्षिक आसन is also one like you can say balancing आसन. So जब भी हम कोई balancing आसन करते हैं, what are the benefit of balancing आसन? Balancing आसन करने से आपका focus बढ़ता है, आपका concentration बढ़ता है. Okay. So now let's see that how to do it. Focus on one point. Okay. Now take your right leg, bend your right leg, try to touch your thighs with your, try to touch your feet with your opposite thigh. Okay, first of all, if you are beginner, you can join your hands in your chest region, hold here for 10 seconds, and if you are advanced practitioner, just join your hands and hold here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Release and relax. Just take complete relaxation. Now do the same practice with your opposite side. Again focus on one point. Okay, chaliye. So now bend your left leg, put your left leg in your right thigh. Now inhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Release and relax.
just take complete body relaxation. पूरा शरीर शिथिल, पूरी body relax. If you are feeling pain in your legs, what you can do, you can just shake your legs. Body को अच्छे ढंग से shake करेंगे. Just shake your complete leg, twist your body right side and then left side, right side and then left side. Body को अच्छे ढंग से twist करें, okay? Legs को अच्छे ढंग से shake करें. Just shake your complete legs here. Now one last asana which we will do in our standing position, that is called Ardha Chakrasana. So for Ardha Chakrasana, just stand straight, take your palms, put your palms in your lower back or glutes, okay, like this. Now from here what you have to do, just make distance between your both legs. दोनों पैरों पे जो है shoulder level जितना distance आएगा same, okay. So now inhale. What you have to do, bend your body backward and hold it there for 10 seconds. So now start. Inhale. Hold here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last 10. Release and relax. Just take complete relaxation here. Keep your body forward, face your body towards your camera, okay. Now relax here. So do some wrist rotation, थोड़ा सा body को rotate कर लीजिए. Twist your body right side, left side, थोड़ा सा wrist को rotate कर लीजिए. Do some basic movements of your neck. Twist your body right, left. Do some neck rotation, clockwise, anti-clockwise, okay. Just bend forward, relax your spine. Relax, spine को relax कैसे करते हैं? Make distance between your both legs. श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके. If you're comfortable, you can grab your elbows. Now shake your body here like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now release and relax. Just take complete relaxation of your body. पूरा शरीर शिथिल, पूरी body relax, okay. So now we will directly move for our meditation, that is called breath meditation. So just follow my guidance, that what I am doing, what I am saying, and try to do breath meditation here. So I am sitting in Vajrasana. You can go with Siddhasana, Padmasana or any meditative position जो आपकी favorite position है, okay. So now what you have to do, take your right palm, put it in your chest, take your left palm, put it in your navel, okay. Now from here just close your eyes. किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होगी. राइट पाम को अपनी चेस्ट पे रखिए, लेफ्ट को अपने एब्डोमिनल रीजन पे. बहुत प्यार से दोनों आंखों को बंद करिए और यहीं पे लंबी गहरी श्वास ले, लंबी गहरी श्वास छोड़े. Just take some long and deep breath in and out. Now what you have to focus, अब आपको focus क्या करना है? When you are taking inhalation, you have to take inhalation for 4 seconds and when you will take exhalation, you have to exhale for 4 seconds. 4 सेकेंड श्वास लेनी है और 4 ही सेकेंड श्वास छोड़नी है, okay? There will be no pause and no jerks in your breathing. श्वासों में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई हलचल नहीं होगी. If any unwanted thought, negative thought is coming in your mind, try to remove it and focus on your breathing. Focus on your breathing and focus on your breathing. Now you can take your palm, put it in your knees. अब बहुत प्यार से, बहुत धीरे से अपने दोनों palms को knees पे रख लीजिए. Now follow on my guidance that what I am saying. Just bring a little smile, a positive smile on your face. एक प्यारी सी smile अपने face पे लेके आए. Just feel good, feel positive. Just think that when you are taking any like a breath in, when you are taking breath in, you are feeling good, you are feeling blessed, you are thinking that any negative aura is going out from your body. जब आप श्वास ले रहे हैं तो जितनी भी आपकी बॉडी में नेगेटिविटी है, ऑरा है जो भी नेगेटिव, वो बाहर जा रहा है. There is no negativity in your body. Just think good. Just think that जब आप श्वास ले रहे हैं, any positive energy is coming in your body. जितनी भी नेगेटिविटी है बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी रिमूव हो चुकी है. You are feeling happy. You are stress free. आप stress free हो. जो भी आपके मन में कोई भी
फालतू के विचार थे, any unwanted thought, negative thoughts, they all are gone. Just feel good. Just try to feel good towards yourself, towards your body. Just try to feel positive here. Just bring a little smile on your face, feel happy. Now we will end our session here. So join your hands in your chest region. Inhale, and while exhaling chant Om. So again we will chant 3 times Om, and then we will go for Guru Mantra, and then we will end our session here. So inhale Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Now, very slowly, very gently rub your palms. Put your palms on your face. Very gently, very slowly open your eyes. Thank you so much for joining the session. Thank you so much for staying here, and we will see you soon. Thank you so much, and namaste.